So we are live now, doctor. We are Perfect. live now. Perfect. Can we start the session? Yes, yes, doctor. We can start. Perfect. Thank you so much, Dr. Reddy's and Dialysis TV, for giving me this opportunity again. We did this during the lockdown time, and I think it was a very great initiative with Dr. Reddy's and Dialysis TV. Took a lot of myths were answered during that time regarding COVID and regarding COVID vaccination as well. And I'm really honored and I'm thankful to you for giving me this opportunity today. And I'm going to make it very easy for the common people because we are going to talk about the common myths which are related to the kidney diseases today. A lot of has been said about dialysis. A lot has been said about kidney diseases in the society. People have a lot of misconceptions, and what I have witnessed in my day-to-day practice is that a lot of patients actually have a lot of misconception regarding dialysis and kidney diseases. I have tried to incorporate all the common questions which are asked by the patients and the common people, and I've tried to answer them today in this seminar that we are doing. So, my talk is going to be very simple, no hi fi scientific words. It's all going to be for the common people. And we are going to talk about the common myths of the kidney disease and dialysis and CKD. So I'm going to put it in terms of firstly, why do we want to know about this? What are kidneys? A lot of people must be having in their mind. So kidneys are basically paired organs that are present behind your spine on either sides. A lot of people can also have just one functional kidney by birth. Kidneys have very important role. They form urine in your body. Other than urine formation, they are also responsible for cleaning your blood in terms of uh, they purify the impure blood and they remove all the impurities in the form of urea, creatinine, and other substances, and they release it into the urine. Other than that, you'll be surprised to know that kidney actually produces two forms of hormones. I'm going to keep it a bit in Hindi so that a lot of common people can understand. So kidneys दो अलग अलग तरीके के हार्मोन भी बनाते हैं. सबसे पहला होता है इरेथ्रोपोइटिन जो आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि आप और हीमोग्लोबिन बनाएं, और दूसरा होता है विटामिन डी का एक्टिवेशन. तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें धूप में रहना चाहिए, विटामिन डी के लिए हमें ये खाना चाहिए, धूप में रहना चाहिए, बट दैट विटामिन डी इज एक्चुअली ऑफ नो यूज इफ योर किडनीज डू नॉट एक्टिवेट इट. सो विटामिन डी इज ऑल्सो एक्टिवेटेड इन द किडनीज. सो किडनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं डेफिनेटली. हमारी जो किडनी है वो पेशाब बनाती है, उसके साथ साथ वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस का भी ध्यान रखती है. इसका मतलब ये कि जो सोडियम पोटेशियम की जो मात्रा है हमारे बॉडी में, उसको भी रेगुलेट करने का काम किडनी का होता है. So this is a brief about kidney, and a lot of people ask क्यों किडनी खराब होती है, what are the causes of kidney failure. So अगर मैं कहूँ कि इंडिया में एज वी नो कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ आज के तारीख में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया है. आई वुड से कि जो कोरोना टाइम स्पेशली वर्किंग फ्रॉम होम है, एंड आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, एवरी वन इज़ फ्रॉम होम. I think lifestyle diseases have really taken a toll, and kidney disease is no exception to it. It has now been recognized that chronic kidney disease is a part and parcel of lifestyle disease. हमारे इंडिया में अगर मैं कहूँ तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर होने के. उसके अलावा किडनी स्टोन होना, कुछ पारिवारिक किडनी में बीमारी जिस जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होना, ये कुछ कॉमन कारण है किडनी खराब होने के. अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी का बीमारी है, क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स है. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो that it can be a silent killer. A lot of times patient actually present with end stage renal failure. तो कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स, बहुत ही कॉमन साइंस जो आप पिकअप कर सकते हैं कि क्या आपको किडनी की प्रॉब्लम है. पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, पेशाब करने जाए तो पेशाब में झाग आना, लाल रंग का पेशाब होना, पेशाब करके वापस आए ऐसा लगे कि पेशाब रह गया, वापस जाना है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ना,
भूख ना लगना, खाना देख के उल्टी का मन करना, चलने में दम आना, यंग पेशेंट्स में हाइपरटेंशन, ये कुछ बहुत ही सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि शायद आपको किडनी का प्रॉब्लम हो। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें शक है कि हमें किडनी का प्रॉब्लम है, या हमारे परिवार में किसी को किडनी का दिक्कत था, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें किडनी का प्रॉब्लम है? ये तो बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही सिंपल इनएक्सपेंसिव ब्लड इन्वेस्टिगेशन है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाता है। उसका कॉस्ट केवल 100 रुपये है, और वो एक एम एल ब्लड से आपको ये बता सकता है कि आपकी किडनी कितने परसेंटेज में काम कर रही है। सो वेरी सिंपल यूरिन इन्वेस्टिगेशन या वेरी सिंपल ब्लड क्रिएटिनिन इन्वेस्टिगेशन कैन एक्चुअली टेल यू in what percentage your kidneys are working. So, getting a kidney test, knowing about your kidneys is not at all expensive. The next question a lot of people ask me कि सर हमारी तो किडनी फेल है, तो क्या हम पानी नहीं पी सकते? बहुत लोगों ने कहा है कि किडनी फेल हो जाती है या किडनी डैमेज हो जाती है तो पानी नहीं पी सकते। ऐसा ये सब गलत है। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर फ्लूइड स्टेटस। इट डिपेंड्स कि आपके पैरों में क्या सूजन है, आप कितना पेशाब प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सोडियम का संतुलन कितना है। एक ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस पे है, जिसको पेशाब नहीं आता, जिसको पैरों में सूजन है, उसके लिए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको पानी की मात्रा कम लेनी है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसको सूजन नहीं है, जिसका यूरिन नॉर्मल आता है, जिसको किडनी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसकी बॉडी का सोडियम लेवल ठीक है, वो पानी की मात्रा एक नॉर्मल इंसान या फिर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको जितना सजेस्ट किया है उतना आप ले सकते हैं। The next question that a lot of people ask is that अगर मुझे किडनी की बीमारी हो गई है, so should I go to alternative medicine in the form of homeopathy or allopathy? इसके लिए मेरा ये जवाब है कि आई रिस्पेक्ट ऑल ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन. I am no one to judge and no one to comment, but what I have personally noticed is that it does not work. एलोपैथी में भी अगर आप देखें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि जब आपकी किडनी श्रंकन हो जाती हैं, किडनीज़ में इरिवर्सिबल डैमेज आ जाता है, तब उसमें रिवर्सिबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है। देन यू हैव टू ऑप्शंस, जिसको कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मतलब किडनी का काम कोई और करेगा। तो कौन कर सकता है? या तो मशीन के द्वारा हम डायलिसिस कर सकते हैं, या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मुझे फेसबुक मैसेंजर पे आया था एक किसी का, एंड उनके लिए आई वुड से आई रिस्पेक्ट ऑल ब्रांचेस बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज नो. The other thing that a lot of people ask is that अगर हमारा डायलिसिस चालू हो जाता है तो हमारा पेशेंट लंबा नहीं जीता। सो इसके जवाब में ये है कि डायलिसिस क्या है। हमेशा याद रखें, डायलिसिस आपका किडनी ठीक नहीं कर रहा है। डायलिसिस केवल आपके किडनी का काम कर रहा है खून साफ करने का और एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकालने का। यदि आप रेगुलर बेसिस पे अच्छा डायलिसिस कराते हैं तो आपके बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल, जो गंदगी की मात्रा है, वो कम रहेगी। जितनी ज़्यादा आपके बॉडी में गंदगी की मात्रा कम, उतनी आपकी तबीयत अच्छी लगेगी, उतना अच्छी आपको भूख लगेगी, उतना अच्छा आपका जीवन रहेगा। मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट है जो रेगुलरली हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहा है, और एक ऐसा पेशेंट है जो 10 दिन में 1 बार, 20 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार डायलिसिस करा रहा है, तो उस पेशेंट के लेवल में बॉडी में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा होगी, वो पेशेंट को भूख कम लगेगी और उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। तो डायलिसिस इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। डूइंग गुड रेगुलर डायलिसिस कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर पेशेंट, एंड आपका पेशेंट एक लंबी अच्छा जीवन जी सकता है। और साथ में एक क्वेश्चन जो मुझे कल ही एक पेशेंट ने पूछा कि हमने सुना है कि डायलिसिस पे पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट मर सकता है। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देर आर अदर मोर कॉमन कॉजेज ऑफ हैविंग अ कार्डियक sudden cardiac arrest. So dialysis per se might have definitely some side effects, might have some risk, especially elderly patients, patients who start late on dialysis, patients with ischemic heart disease जिनका हार्ट पहले से कमज़ोर होता है, उनमें बीपी फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो yes, it might be risky, but it is not true that kidney dialysis start करने के बाद उनको हार्ट अटैक आ जाएगा. The next question which I have received on my Facebook Messenger is that, doctor, my serum creatinine is more than 5. Someone told me I must have dialysis. Now इसके लिए मेरा आंसर आपके लिए पास ये है कि someone has told me is wrong. It should be your doctor or your nephrologist who should suggest dialysis to you. The next question is that it is not necessary that every patient with a serum creatinine of more than 5 will need dialysis. उसी के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा पेशेंट जिसका क्रेटिनिन 3 या 4 हो उसको भी डायलिसिस लगे. तो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. अगर आपका सीरम क्रेटिनिन 5 है तो आप अपना एक जीएफआर निकाल सकते हैं. जीएफआर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. ऑनलाइन उसका फॉर्मूला अवेलेबल है. एज, वेट और सीरम क्रिएटिनिन के आधार पे आप अपना एक ई जी एफ आर आप अपना निकाल सकते हैं. दी अदर थिंग इज कि 5 क्रिएटिनिन पे अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है, अगर आपको पेशाब नहीं आ रही है, अगर आपके पैरों में सूजन है, ये कुछ इंडिकेशंस डेफिनेटली हैं डायलिसिस के. लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन 5 है और आपका क्रिएटिनिन स्टैटिक है 5 पे, काफ़ी लंबे समय से आपका क्रिएटिनिन 5 चल रहा है, आपका बीपी कंट्रोल है, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपको कोई सूजन नहीं है, आपको पेशाब अच्छा आ रहा है, एंड आपके अदर पैरामीटर्स लाइक पोटेशियम एवरीथिंग इज ओके, then you might just not need dialysis now. I'm not saying that you will never need dialysis, but you might not need it now, and you can actually prepare for the future in the form of या तो एक हाथ में एक एवी फिस्चुला बना सकते हैं, या तो फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं. अदर क्वेश्चन जो मुझे आया है फेसबुक मैसेंजर पे है अबाउट ऑर्गन डोनेशन. तो 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे था, जिसके लिए वी डिड अ स्मॉल अवेयरनेस कैंपेन, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. द फर्स्ट वन वाज, ऑर्गन डोनेशन बहुत रिस्की है. अगर अ, मेरी माँ या मेरे पिताजी किडनी देते हैं तो उनको कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने परिवार से किसी को किडनी देना नहीं चाहता. ये गलत है. ये गलत क्यों है? ये गलत इसीलिए है कि सबसे पहली बात, ऑर्गन डोनेशन में रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के पहले वो पूरी जांचें होती हैं डोनर की जो होनी चाहिए. Now what happens is that there is a taboo in the society कि ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो डोनर डोनर भी एक पेशेंट बन जाएगा. ये सही नहीं है. आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग एक ही किडनी के साथ बॉर्न होते हैं, तो एक किडनी पे जीना संभव है. और जब ट्रांसप्लांट का वर्कअप होता है तब हम ये चेक करते हैं कि कहीं एक किडनी निकालने से वो डोनर को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, उसके टोटल जीएफआर कितना है, उसकी दोनों किडनी स्प्लिट फंक्शन में कितना काम कर रही है. तो ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि ऑर्गन डोनेशन इज रिस्की. ऑर्गन डोनेशन एक नेक काम है. हम सबको ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करना चाहिए. The other question that I have received is that किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लंबी दवाइयाँ चलती हैं और हो सकता है डायलिसिस भी लगे. अ, इसका जवाब ये रहेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद यस, कुछ दवाइयाँ डेफिनेटली चलती हैं. अ, वो दवाइयाँ इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो नई किडनी को एक्सेप्ट करके रखे, ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस नई किडनी को रिजेक्ट ना करे. बहुत सारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इन ट्रांसप्लांट की मेडिसिन्स दिलाने में हेल्प करते हैं. यूजुअली पहले 2 से 3 महीने काफ़ी भारी मेडिसिन्स चलती हैं, जिसका कॉस्ट आपको थोड़ा आ सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द मेडिसिन्स इन द पैकेज और help the patients for the medicines. Yes, you do need to take lifelong medicines, but they are usually only 2 or 3 tablets which you have to take. I think it is always better than doing dialysis or having no choice. The other question is that kidney transplant होने के बाद भी dialysis लग सकता है क्या? Well, I would say it depends on what is the outcome.
अगर हम देखें तो द सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसप्लांट इज अप्रॉक्सीमेटली 90%. देर आर फ्यू कंडीशंस लाइक FSGS जिसमें ट्रांसप्लांट के बाद रिकरेंस हो सकता है, बट आई थिंक सिर्फ क्योंकि 100 में से एक या दो लोगों को ऐसा हुआ, हम ये धारणा बनाने की ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है. Always, always, always consult your nephrologist. Always speak to your nephrologist that what are the risk involved. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या रिस्क है हमारे केस में, क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड एवरी केस इज डिफरेंट. uh, the next question that I've got is kidney regarding kidney stones. कि अगर मुझे एक बार किडनी स्टोन हो गया तो मुझे वापस किडनी स्टोन नहीं होगा. So this is not correct. Kidney stones, you'll be surprised to know that बहुत सारे किडनी स्टोन्स जो है वो एक्चुअली रिकरेंट होते हैं. किडनी स्टोन्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. किडनी स्टोन्स आपके डाइट की वजह से हो सकता है, आपके वाटर इनटेक की वजह से हो सकता है. कुछ इनहेरिटेड किडनी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें यूरिन के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है. एक बीमारी है हाइपर कैल्सीयूरिक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि पेशाब में यूरिनरी कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है. ऐसे स्टेट में इन पेशेंट्स को स्टोन फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है. सो आई थिंक कंसल्ट या डॉक्टर. अगर आपको एक बार स्टोन हुआ है तो वो स्टोन का स्टोन एनालिसिस कराइए कि क्या कॉम्पोजिशन था उस स्टोन का, by which you can guess and you can predict if there is a chance of recurrence of stone disease. The other question that I've got is that स्टोन डिजीज से ठीक होने के लिए बियर पीना चाहिए. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एनी लिकर लाइक बियर फॉर स्टोन डिजीज इज बेसिकली सो दैट यू हैव डायलिसिस, सो दैट आप बहुत ज़्यादा पेशाब पास करें. Usually, I would not suggest patients to have any form of intoxication for kidney stones. My suggestion would be to go for therapies like tablets, जिससे आपका थोड़ा यूरिन फॉर्मेशन बढ़ सकता है, थोड़ा पेशाब का रास्ता डायलेट हो सकता है और आप किडनी स्टोन पास कर सकते हैं. So I do not suggest my patients to go for beer or any form of intoxication. Um, so these are the few common myths that I tried to cover up today on this live session, and I'm happy to take up any questions if they are. You can leave it in the comment box. So we have one question. Hi doctor, can CKD be hereditary? Yes. Yes, CKD can be hereditary. There are some diseases like पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो परिवार में चलते आता है, जिसमें फैमिली में ऑलमोस्ट 50% का इनहेरिटेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ कि फॉर एग्जांपल अगर एक फादर में है तो उनके 50% बच्चों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है. अदर फॉर्म ऑफ फैमिलियल या हेरिडिटरी इज आइपॉड सिंड्रोम, जिसमें किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक डिफेक्ट आ जाता है. इन्हें सुनने और आँखों से दिखने में भी तकलीफ होती है. सो यस, CKD कैन बी हेरिडिटरी. सम फॉर्म ऑफ FSGS, nephrotic syndromes are also hereditary. The next question that we are having is, doctor, if male 70-year-old patient fasting is 140, post-meal is 250, creatinine is 1.09, not taking any diabetes or hypertension medications and managing same level since 1 year, do he need diabetic medications to avoid kidney problems? Sameer ji, I think so. If you see, इनका जो फास्टिंग लेवल एंड पोस्ट मील लेवल है दोनों काफ़ी ज़्यादा रेस्ड है. I would suggest, yes, please start a medication for sugar control. जैसा मैं इनके वैल्यूज़ देख रहा हूँ और एज देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ओरल थेरेपी शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस पेशेंट. इट हैज़ बीन प्रूवन कि अनकंट्रोल्ड बीपी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर CKD या फिर किडनी डैमेज, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बोथ can cause protein leak in your from your kidneys, and it can definitely lead to kidney problems. So I think definitely it would be worthwhile to start some form of oral anti-hyperglycemic agent, and I'm pretty sure that it can be controlled on oral therapy. Creatinine looks fine. Yeah.
The next question we have got is from Chandan Mishra ji, saying, Doctor, how long can I take rabiprazole? So, rabiprazole, omeprazole, pantoprazole, all these are the um, same group of proton pump inhibitors. It has been proven that proton pumps inhibitor, if taken for a long time, can cause some form of interstitial nephritis in your kidney. My suggestion to my patients is take any PPI, rabiprazole, omeprazole, pantoprazole for not more than 2 weeks. If you need any further, consult your doctor and then take it. Even if you feel that you have a lot of issues, you can go for a simpler or a more safe form like ranitidine, a H2 blocker, or you can also go for this therapy sometime in between, like you take for 2 3 days and then you can stop. So taking chronically is not advisable. The other is how to recognize CKD in early stage. So as I said, CKD can be a silent killer. You actually might not know when you start symptoms. So कुछ बहुत ही अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि अगर आपको पैरों में सूजन आती है, आँखों के नीचे अगर आपको सूजन आती है सुबह उठने पे, पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में झाग आता है, पेशाब में खून दिखे, अगर आपको पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है, अगर आप वापस आते हैं आपको ऐसा लगता है पेशाब रह गया वापस जाना है, ये कुछ अर्ली साइंस हो सकते हैं कि आपको कोई फॉर्म ऑफ किडनी डिजीज़ है। भूख ना लगना, खाना देख के उल्टी का मन करना, ये सारे कुछ अर्ली सीकेडी मार्कर्स डेफिनेटली हो सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? I can't see any other questions, doctor. There's one other question, doctor. या, long term consumption of painkillers for arthritis patients, can he develop CKD? Yes. Painkillers, especially NSAIDs in the form of aceclofenac, then diclofenac, all these can cause kidney problems. It is a recognized group of disease called analgesic nephropathy. So yes, I have seen a lot of patients in my practice, patients with rheumatoid arthritis coming with taking a lot of painkillers since many years. Yes, you should consult your doctor. There are some safer options, safer painkillers, which might be less harmful for your kidneys. So yes, the answer is yes. There are no other questions, doctor. So I want to ask you one question. Like there are many myths about the CKD. I mean, this vaccination, right? Yes, Can dialysis patients take the vaccination? And yes, people have doubts. Can CKD patients take yes, dialysis on vaccination day and out? yes, So, yes. like, can you clear those doubts for our audience? Yes, of course. We did a very good lecture about lockdown care in kidney, and we covered actually that time because vaccination was in the air. It was all in the news. We tried to cover a lot of things, but yes, I would like to brief about that. So CKD, any form of kidney disease, is actually a immunocompromised state. पेश हमारी बॉडी में एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होता है, ये सीकेडी या फिर किडनी पेशेंट्स में ये हैम्पर्ड हो जाता है, और उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इसीलिए आपको अगर सीकेडी है, या अगर आपको कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, या मान लीजिए आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या आप कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसी मेडिसिन पे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो। सो यू आर एट मोर रिस्क of getting any form of infection. So yes, all CKD, all transplant patients must take the vaccine. The other question that a lot of patients ask me, which vaccine to take. Should I take COVID Shield? Should I take Covaxin? Should I take Sputnik? I say, please take whatever is available. It does not make a difference. All CKD, all transplant patients must take the vaccine. Yeah, doctor. People have many doubts on this Covishield because
there are few blood clots happening in Yes. people who took this Covishield. So there are Covishield. many myths going around this Covishield. Right. So can you clear can you clear those myths? Like people are having blood clots if they take Yes. Covishield. So a lot of myths are going around COVID shield as well. So the first one that they are saying is that patients who had some heart disease, they should avoid taking COVID shield because it would cause in some form of clot formation. The other thing is about potency. So if you read the news, if you just surf on Google, you'll see a lot of people mentioning that a man taken 2 doses of COVID shield developed Delta variant, and there's a lot of false news about Sputnik, the Sputnik trial being superior. What I personally feel is that I think we still lack a lot of scientific evidence. We are still learning about COVID and COVID vaccination. So when my patients ask me which vaccine to take, I tell them take whichever is available first, because I think we're still lacking the scientific data, and we do not want to pass and promote any form of wrong information. So I think I've personally taken COVID shield. So I personally feel that all vaccines have some pros and cons, definitely, because of their manufacturing, because of their potency. But what I personally feel is that we still lack a lot of scientific data to comment on anything at the moment. Okay, doctor. I think there are no more questions. Thanks for your valuable time on Thank you. Independence Day and Thank you so much. clearing all the doubts of our audience, on CKD and its myth. Thanks, Thank you so doctor. much. Thank you for giving me this opportunity. I think Dialysis TV is doing a great job about with to educate people, and I think a lot of people would benefit with these activities. Yeah, doctor. Thank you. Perfect. Thank you.